તમે 1 કલાકની અંદર 3 વીઘાનું કામકાજ કરી શકો છો અને માત્ર 100 રૂપિયાના ખર્ચાની અંદર। मैं कहता हूं कि टाटा के लोहे के साथ में हम बाकायदा खड़े होकर दिखा सकते हैं इस चीज। गेहूं, जौ, धान, मक्का, ज्वार, ग्वार, बाजरा और तुर और आपकी जो दालें हैं गुजरात में, उन सभी फसलों की कटाई 20 मजदूरों का काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। ઘઉં વાવીને કણમાંથી મણ કર્યા, આ ઘઉં વાવીને કણમાંથી મણ કર્યા, આ જગતને જમાડવા માટે આવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગ કર્યા। તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ અમદાવાદમાં કે જ્યાં આરબીડી મશીન ટૂલ્સ દ્વારા સરસ મજાના ઊભા પાકને લગતું કાપવાનું મશીન બનાવવામાં આવેલું છે, જેને આપણે જાદુઈ કાતર કહીએ છીએ। આ કાતર માત્ર ખાલી જાદુઈ કાતર નહીં પણ રોબોટિક સિસ્ટમની જેમ આખી કામકાજ કરવાની છે। ઘઉં હોય, જુવાર હોય, બાજરી હોય, રજકો હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની નીણ આપણે કહીએ એ કાપવા માટેનું આધુનિક મશીન એટલે કે પાવર રીપર મશીન આપણે કહીએ છીએ। આ તમે જોઈ શકો છો ભારત દેશનું માત્ર એક એવું મશીન કે જે સીટ સાથે અવેલેબલ છે અને કેટલા હોર્સ પાવરમાં છે, કયા પ્રકારનું એન્જિન છે, કેવી પ્રકારની સબસિડી મળવાપાત્ર છે અને એમાંય હજી સુધીમાં આપણે ખેડૂત પુત્ર ગુજરાતીમાં જે પણ વિડીયો બનાવીએ છીએ એ માત્ર ને માત્ર બ્રાન્ડિંગ કંપનીના જ બનાવીએ છીએ। એટલે જે પણ વસ્તુની બ્રાન્ડ હોય એને આપણે દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો પૂરી કંપનીનો આઉટલેટ તમે જોઈ શકો છો, એમાં કેવી રીતના આ મશીન આરબીડી મશીન દ્વારા બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, મેન્યુફેક્ચર પ્લાન્ટ કેવી રીતના ચાલે છે એ તમામ માહિતી મેળવવાની છે, જેથી કરીને કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રો છેતરાય નહીં અને સારી રીતના આરબીડી મશીન ટૂલ્સ સાથે જોડાઈને આ રીપર મશીન છે એ ખરીદી શકે અને સારી એવી સર્વિસ પણ મેળવી શકે। તો એના ઓનર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂકેલા છે। હું છું તમારી સાથે સાગર રાસડિયા, ખેડૂત પુત્ર। આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત છે તો જગત છે એવા હેતુથી અવારનવાર ટેકનોલોજીકલ ડિજિટલ ખેતીવાડીની માહિતી આપણે અવારનવાર લાવતા રહીએ છીએ। તો ચાલો આ તમામ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ની આપણે મુલાકાત લઈએ। तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं गुजरात के सभी खेडूत मित्रों का आरबीडी मशीन में बहुत बहुत स्वागत करूँ छूँ। और इस मशीन के बारे में आप जानते हैं किसान भाइयों, पिछले साल कई सालों से आप मजदूर नहीं मिलने के कारण, मजदूर नहीं मिलने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या है किसानों को। और कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि उनका जो पैसा है, जो बचत का पैसा है, वो मजदूरों के में चला जाता है और नहीं बच पाता। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए हम लेके आए आरबीडी का सीट वाला पावर रीपर। अब किसान भाइयों करें बैठे बैठे फसलों की कटाई, गेहूं, जौ, धान, मक्का, ज्वार, ग्वार, बाजरा और तुर और आपकी जो दालें हैं गुजरात में, उन सभी फसलों की कटाई आप 1 घंटे में। किसान भाइयों में नोट एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो आप एक बार नोट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा कि कहाँ मेरा बचत का पैसा जा रहा है। 100 रुपये में 1 घंटे में 1 एकड़ 3 बीघा 60 बिस्वा की कटाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। 20 मजदूरों का काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। તો ખેડૂત મિત્રો, આ આરબીડી મશીનનો તમે વિચાર જાણી શકો છો। આજે જાદુઈ કાતર તમે સીટવાળી જોઈ રહ્યા છો, ભારતની એક એવી માત્ર કાતર કે જેમાં તમે 1 કલાકની અંદર 3 વીઘાનું કામકાજ કરી શકો છો અને માત્ર 100 રૂપિયાના ખર્ચાની અંદર। બીજી પણ આપણે માહિતી મેળવી લઈએ। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, सब्सिडी के लिए आपको एक बहुत पॉइंट नोटेड, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। आप बहुत भोले हो, कोई भी कुछ भी देता है सब कुछ खरीद लेते हो। मैं नज़दीक के कैमरे की सहायता से आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको जब भी मशीन लेनी हो तो ये ग्रीव्स कॉटन, ये भारत के आज़ादी से 100 साल पहले की कंपनी 1859 से काम कर रही है। बॉस्को कंपनी का इसमें मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ नोट करके किसी चाइनीज इंजन के चक्कर में मत फंस जाना, सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो इस इंजन के साथ में मिली। ये ISI मार्के का इंजन है, आप देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि ISI मार्के का इंजन है। ISI मार्के का इंजन ग्रीव्स कॉटन आपने पहले भी देखा होगा, भारत में ऑलरेडी छोटे जो टेम्पो आते हैं उनमें इसी कंपनी का इंजन आता है। तो ये चेक करके लीजिएगा, कहीं सस्ते के चक्कर में आप नुकसान मत कर लीजिएगा अपना सब्सिडी का और क्वालिटी का। हम क्वालिटी तो पहले भी बेहतर थी, आज भी बेहतर है। मैं कहता हूँ कि टाटा के लोहे के साथ में हम बाकायदा खड़े होकर दिखा सकते हैं इस चीज़। टाटा के लोहे के साथ में हमने मजबूती के साथ में किसान भाइयों को मशीन प्रोवाइड करते हैं मेरे किसान भाइयों। ઓકે, તો ભૂપેન્દ્રભાઈ, આપણા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને આ તમારા જે આરબીડી મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે એ પણ દેખાડો, જેથી કરીને ખેડૂતોને વિશ્વાસ આવે। बिल्कुल, तो मैं किसान भाइयों आपको जो हम बनाते हैं किस तरीके से, बहुत सारे लोग आपकी रात दिन सेवा करके जो मशीन कितनी प्रेम तरीके से बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों आज। તો ખેડૂત મિત્રો, આપણે આરબીડી મશીનના મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં આવી ગયા છીએ। કોઈ પણ કંપની પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ બતાવતું નથી, પણ ખેડૂતોના વિશ્વાસ માટે આરબીડી મશીન પોતાના મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ પણ બતાવી રહ્યું છે। શરૂઆત કરીએ આપણે।
किसान भाइयों, ये है CNC मशीन जहाँ पे आपके ये सब तैयार होते हैं। एक डिजाइन, एक ऑटोमेटिक फुल मशीन। ओके। उसके बाद में ये आपके उनकी अकॉर्डिंग जो हमारे डिजाइन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फिनिशिंग करना हुआ, लेथ मशीन हो गया, ओके। उसका वर्किंग करना, ये सारे काम यहाँ होते हैं अपने। ओके, आगे भी बताइए। उसके बाद में ये लोहा का यहाँ कटता है अपना कि किस किस साइज में क्या क्या चीज़ें तैयार होती है। ओके। वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में ये शाफ्टिंग पे ग्रुप बनाना पड़ता है। ओके। वो ग्रुपिंग अपनी यहाँ से होती है। ઓકે, આ બધો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ તમે આરબીડી મશીન ટૂલ્સનો તમે જોઈ શકો છો। આગળ પણ આપણે જોઈએ કોઈ પણ ये जो होल होते हैं, जो मशीनों पे छेद करते हैं, कहाँ कहाँ कितनी साइज के, वो यहाँ होते हैं। ओके। इन सभी जगह ये आपके अलग अलग ग्रेड का लोहा हो गया। ઓકે और लोहा सारा टाटा का यूज करते हैं हम। ISI 10 रुपए किलो महंगा आता होगा तो आता होगा। मेरा किसान ये तो नहीं है हर महीने मशीन खरीदेगा, हर साल मशीन खरीदेगा। 5-10 साल के लिए मशीन चलना चाहिए उसकी क्वालिटी की, क्योंकि टाटा के लोहा मजबूती के नाम से, और टाटा में क्या पूरी दुनिया जानती है टाटा की क्वालिटी, टाटा को सब जानते हैं। તો ખેડૂત મિત્રો, આ લોઢું પણ તમે જોઈ શકો છો કે પૂરા ગ્રેડિંગ વાળું આખું લોઢું છે। આગળ પણ આપણે જોઈ લઈએ। ये कटर है। ઓકે। ये सब इधर फिनिशिंग होता है, सब ओके। चीज़ें, गेयर बक्स से एवरीथिंग, सब कुछ चीज़ें। ओके, बाद में आगे भी बताइए आप। बिल्कुल सर। ये सब फ्रेम क्या है ये भी बता दीजिए आप। ये आगे फ्रेम है, ये पीछे का गियर बक्सा है, ये आगे के कटर के हैं। अब भी इन पे असेंबलिंग बाकी है, अलग अलग चीज़ें जुड़ती है। किसान भाइयों, बहुत से लोग मशीन को तैयार करके आप तक मशीन पहुंचाते हैं। ओके। तो ये सारे काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर बेल्डिंग होता है, ओके। एक एक चीज़ बेल्डिंग होता है इधर। ओके ओके। फिर इधर का पार्ट होके फिर यहाँ पे जाता है। તો આ વેલ્ડિંગનો સેક્શન છે ખેડૂત મિત્રો। આગળ બીજો પાર્ટ પણ આપણે જોઈએ અને આગળ કેવી રીતના આખું મશીન और ये કમ્પ્લીટ થાય છે આપણે सारा જોઈએ। अभी उसके बाद में कलर जाता है। और कलर भी किसान भाइयों बता देता हूँ आपको, हम कच्चा कलर नहीं करते हैं। ओके। हम कच्चा कलर, आप बोलते हो ना भट्टी पेंट पुराना हाँ। मजबूत वाला, वो वाला काम करते हैं कि जंग ना लगे और स्क्रेचेज ना हो उस पे। इसे पाउडर कोटिंग बोलते हैं आज के जमाने में, वो वाला पेंट करवाते हैं मेरे किसान भाइयों आपके તો लिए। પાવડર કોટિંગ સાથે કલરનું કામકાજ પણ કરવામાં આવે છે। આગળ આપણે જોઈએ કે કેનો સ્ટોક કરેલો છે એ બધું જોઈએ આપણે। अब हम चलेंगे, आपको असेंबलिंग यूनिट दिखाते हैं हमारी। ओके। तो किसान भाइयों, बनने के बाद में, जब पाउडर कोटिंग होने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके के फिनिशिंग से पाउडर कोटिंग हो जाती है। ओके। उसके बाद में पाउडर कोटिंग होने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दोनों तरफ, इस तरफ अपना कटर लगता है और इस तरफ लगता है पीछे का गियर बॉक्स। ओके। इस तरीके से ये एक एक पार्ट इन पे लगते हैं सागर भाई। ओके। तो एक एक चीज़ मैं आपको नज़दीक से और दिखा देता हूँ। ये कटर हो गया और ये आपका गियर बक्सा हो गया। एक एक चीज़ असेंबल होते होते पार्ट टू पार्ट एक एक चीज़ में आगे ये बढ़ती जाती है। તો ખેડૂત મિત્રો, એસેમ્બલી લાઈન એટલે કે જેની ઉપર કારીગરો કામકાજ કરતા હોય તમે જોઈ રહ્યા છો। અલગ અલગ પ્રમાણેના બોલ્ટ ખીલી રહ્યા છે, અલગ અલગ પ્રમાણેના સાધનો ફિટિંગ કરી રહ્યા છે। પણ આ ગુજરાતની એક એવી કંપની અને ભારત દેશની એક એવી કંપની કહી શકાય કે જે પૂરેપૂરી પ્રોપરલી રીતે ખેડૂત મિત્રોને બતાવે છે કે કેવી રીતનું અમે કામકાજ કરી રહ્યા છીએ, સાથે કેવી ક્વોલિટીની વસ્તુ વાપરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રો છેતરાય નહીં। આપણે આગળ પણ જોઈએ કેવી રીતના લાઈનમાં આગળ કામકાજ ચાલે છે। बताइए आप। इस तरीके से एक एक पार्ट अलग अलग उसमें लगते जाते हैं। ओके। और इस तरीके से जब पूरा मशीन तैयार हो जाता है, यहाँ तक आते आते सब चीज़ें लास्ट में एंड में पूरा, सिर्फ इसमें ओनली फॉर इंजन लगाना बाकी रहता है। ओके। ओनली फॉर इंजन लगाना बाकी रहता है इसमें। बाकी सब चीज़ें आप देख रहे हो कि एक पूरी सब चीज़ें यहाँ पे लग चुकी है। Okay. ओनली फॉर इंजन लगना है, बाकी सब कुछ पूरा मशीन अभी यहाँ पे कंप्लीट है। वो भी हम आगे देख लेते हैं इंजन कैसे लगता है वो सब। बिल्कुल। ओके। तो ये स्टॉक रखा हुआ है, सीजन की तैयारी, सीजन आ चुका है, सीजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर ही बाकी है गेहूं काटने की। गेहूं कटाई, जो हाँ। कटाई, सरसों कटाई, चना कटाई, तुर कटाई, इन सब का टाइम आ चुका है। 25-30 दिन ही बाकी है बस। तो ये आ गया है। उसके बाद में आपको जो मशीन तैयार होके मिलने वाला है वो तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जब कंप्लीट हो जाएगा मशीन ओके। तो ये आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये मशीन की डिलीवरी का चार्ज फ्री है भारत में। आरबीडी एक ऐसी कंपनी है जो डिलीवरी का चार्ज नहीं लेती है सागर भाई। ओके। 2 साल का मशीन का आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा गारंटी वारंटी रहने वाला मेरे सागर भाई, सब्सिडीज का रहने वाला। प्लस मैं आपको गुजरात में, हम गुजरात के किसान भाइयों के लिए आज मैं ये डिसाइड किया है मैंने कि मैं अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ
तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो इस वीडियो को देखेगा और फ़ोन करेगा और ऑर्डर करेगा तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट उसके साथ में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 5,000 रुपये का सामान मशीन के साथ में से एक ब्लेड का सेट हो गया, टूल किट हो गया, स्टार का व्हील हो गया, लंग्स हो गया, स्पॉकेट हो गई, साथ में और उस मशीन के साथ में आपको फ्री मिलने वाला मेरे किसान भाइयों। તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે ભારત દેશની એક એવી માત્ર કંપની કે જે ખેડૂત મિત્રોના વિચારો સાથે કામકાજ કરી રહી છે અને એમાંય ખાસ કરીને આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર અમદાવાદની ધરતી ઉપર કામકાજ કરે છે। તો આરબીડી મશીન ટૂલ્સની બીજી આપણે વાત કરીએ તો અલગ અલગ પ્રમાણેના એન્જિન અને એમાંય ખાસ કરીને ગ્રીવ્સ કંપનીના એન્જિન, સબસિડીની વાત કરીએ તો ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોને સબસિડીમાં મળવાપાત્ર છે। સર્વિસની બાબત કરીએ તો 2 વર્ષ સુધીની ઘણી બધી વસ્તુઓમાં વોરંટી પણ આપવામાં આવી રહી છે। એની ટીમ પણ સર્વિસ કરવા પણ ત્યાં પહોંચી જાય છે અને આજે તમે જો આ વિડીયો જોઈને ફોન કરશો, ઓર્ડર લખાવશો તો 5,000 રૂપિયા સુધીનું તમને ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે અને બીજી 5,000 રૂપિયાની ટૂલ કિટ જે સાથે આવે છે એ પણ તમને ફ્રીમાં આપવામાં આવશે। એટલું જ નહીં, ગુજરાતના નાના મોટા ગામડામાં, ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સુધી તમને ડિલિવરી જે કરવામાં આવશે એ ડિલિવરી પણ બિલકુલ ફ્રીમાં કરવામાં આવશે। તો હવે મારે તો આ સીટ નીચેથી ઉતરીને તમને એટલું જ કહેવાનું છે ખેડૂત મિત્રો કે જો આ કંપની આવી છે તો વધારવાનો સમય આવી ગયો છે। ઘઉંની સિઝન ટૂંક સમયમાં જ શરૂઆત થવાની છે। તો ઊભા પાકોને કાપવા માટે આરબીડી મશીન સાથે આપણે જોડાઈએ અને આ આરબીડી મશીનના વિચાર સાથે ખેતીમાં અગ્રેસર એક નવું ડગલું માંડીએ અને ખેતીવાડીને ચમકાવીએ। જય જવાન જય કિસાન આ બંને છે આપણા દેશની શાન। વધારે માહિતી માટે નીચેના જે કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે એમાં તમે આજે જ કોલ કરી શકો છો।